Good morning. As already had sent you the revision worksheet, today we see the particular solution of that worksheet. So here very first particular given to you, that is filling the blanks. So here very first blank given, that is which blank and blank metals are soft and can be cut with the knife. Already children, we have learned about the metals. Metals, they are generally hard, but few of the metals are soft, which can be easily cut with the use of knife, and both the metals are known as sodium and potassium, children. Second, ब्लैंक इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन सी ऐसी मेटल है जो लिक्विड होगी. तो हमने पढ़ा है द मेटल विच इज़ यूज्ड इन द थर्मोमीटर, दैट इज़ नोन एज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड इन द स्टेट एट रूम टेम्परेचर. Suspension of rust. Rust is nothing but is the oxide of iron, and we know that Fe is the metal, and metallic oxide are always basic in nature, so they turns red litmus to blue. Okay, red to blue. So that particular metallic oxides are basic in nature. So very first blank which is given today, that is sodium and potassium metals are soft and they can be easily cut with the use of knife. Mercury is the only metal which is found in the liquid state at room temperature. Third, a suspension of rust. Rust is nothing but it is a oxide of iron in water which turns red to blue litmus, and it is basic in nature. Now move on the fourth one. General metallic oxides are, अभी हमने लिखा है कि they are basic in nature because they are just turn the blue litmus, red litmus to blue. And when we talked about the non-metal oxides of non-metal like SO2, CO2, whenever they are dissolved in water, and when we do the litmus test, they are turning the blue litmus into red, so we can say that they are acidic in nature. Okay. Now next is metals react with acids to produce. हमेशा metal जब भी acid के साथ react करता है तो हमने पढ़ा है कि they are forming hydrogen gas and they burns with. हमने पढ़ा है कि whenever we are just doing the taste for hydrogen gas, and when we'll just take that burning matchstick to the particular gas, it produces a pop sound. तो जो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा. सो हियर यू कैन हैव द सोल्यूशन फॉर द 5 ऑफ द ब्लैंक्स. रिमेनिंग 4 वी आर डूइंग राइट नाउ. सो यू जस्ट हैव अ लुक ऑन द वेरी फर्स्ट. सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स, दे आर वेरी सॉफ्ट, कैन बी कट विद द यूज ऑफ नाइफ. दोनों मेटल्स को हम छुरी से काट सकते हैं. मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जिसे थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं हम लोग. सस्पेंशन ऑफ रस्ट. रस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ नोन एज ऑक्साइड ऑफ आयरन, एंड आयरन इज़ द मेटल. सो मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा है कि वो बेसिक है. डेट मीन्स कि जब भी उसकी लिटमस टेस्ट करते हैं तो रेड कलर का जो भी लिटमस है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू. नाउ फोर्थ वन, इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर basic in nature, whereas oxides of non-metal are acidic in nature. Metals react with acid to produce hydrogen gas with a particular characteristic of pop sound. So you just have a look, you can just do the revision. Now sixth one is here in the worksheet it is written as A, but we have to replace it by D. The blank reactive metal can replace blank reactive metal from its cell solution. Children, we have learned that displacement or replacement reaction in which the more reactive metal can replace the least reactive metal. So here what we can write answer is that the more reactive metal or the most reactive metal can replace less reactive metal from its cell solution. Now next is the element which possess character of metal and non-metal are called. एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, तो चिल्ड्रन वी हैव लर्न दैट दे आर नोन एज मेटेलॉइड्स और they are also known as semi metals.
The elements which possess character of both metals and non-metals, they are called metalloids or semi-metal. Next, the non-metal blank is used in the water purification. We have learned that chlorination process in classes of 7th and 6th. Chlorination process, chlorine is the non-metal which is used in the purification of water. Now the non-metal which is found in liquid state, कौन सी ऐसी non-metal है? तो we can write that bromine, which is a brown color liquid used in which is found in liquid state, we can write, children. So these are the 9 blanks which we have completed. First, the more or the most reactive metal can replace least or less reactive metal from its cell solution. That reaction is known as single displacement reaction, or we can write that replacement reaction. The element which possess a characteristic of both metal and non-metal, they are known as metalloids, or we can write that semi-metals. The non-metal which is used in purification of water, blank is given. The non-metal, chlorine is used in the water purification process. And lastly, which non-metal is liquid, यहाँ पे जो blank के form में दिया है, the non-metal blank is found in liquid state. यहाँ पे जो blank दिया है वो है bromine, ठीक है, और यहाँ पे जो blank दिया है वो chlorine. So these are the blanks which we have solved. Now we move to the reasoning part. First reasoning statement is, bells used in temples are made of metals, not wood. Children, we know that metals are highly durable, and when we talked about wood, wood is not that much strengthened than that compared to metal. दूसरा जो reason है वो हमें लिखना है यहाँ पे, metals have a unique property. When we talked about metals, metals have a unique property when we talked about, and that property is known as sonority, or we can write that sonorous property, due to which whenever metals heat by any other object, they produce a metallic sound, tinkling sound or large sound, where compared to metal, wood doesn't have any kind of sonorous property. That means they are not producing a large sound, they produce a sound but a dull type of sound is produced, so we cannot take wood for making bells. Instead of that, we are taking metal for preparing or just having a फॉर्मेशन ऑफ बेल्स. बेल्स जो बनते हैं वो आयरन से बनते हैं. आयरन मेटल है जिसके पास सोनोरिटी और सोनोरस प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जब भी वो दूसरे मेटल से whenever it is struck by the another object, so it produce a large sound, large metallic sound, loud metallic sound you can write. So that's why it is they're made up of metals, not by the wood. So this is the very first reasoning. Now second, a copper vessel when exposed to moist air for a long acquire a dull green coating is there. Copper, that means कि जिसे बोलते हैं तांबा और पित्तल, जब भी इसका बर्तन मॉइस्ट एयर में रहता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग होता है. वाई? तो यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि कॉपर जो भी है मेटल, when it reacts with atmospheric CO2, CO2 is what? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो वो जो भी केमिकल प्रोड्यूस करता है COH2 CO3, there is a complex compound which is known as copper hydroxide cupric carbonate. तो ये जो भी कंपाउंड है जिसकी वजह से ग्रीन कलर कोटिंग इज देयर formed on copper. So we can just have the answer that copper vessel when exposed to moist air for long acquire a dull green coating is there produce. तो आप इतना भी लिख सकते हो that is there in between the reaction of copper with कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इतना लिखोगे तो भी सही होगा कि जो कॉपर है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का कोटिंग प्रोड्यूस करता है. सो दैट इज द आंसर फॉर द सेकेंड रीजनिंग स्टेटमेंट. सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन. ये हमने बहुत बार सॉल्व आउट किया है कि सोडियम मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है. वो वेन एवर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर इट इज़ गोइंग टू कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, तुरंत ही वो आग पकड़ लेता है. And that's why to prevent accidental fire, sodium is going to be kept in the kerosene, or we can write that kept in the kerosene.
सोडियम मेटल, फिर से बोल रही हूँ कि वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। स्पॉन्टेनियसली वो जब भी एयर या तो वाटर के कांटेक्ट में आता है वो आग पकड़ता है, वो आग को एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए सोडियम इज़ देयर kept in the kerosene, kept under the kerosene, or we can write stored in kerosene. Now fourth one is phosphorus is stored in water. यहाँ पे देखो सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, यहाँ पे phosphorus is highly reactive non metal. When we talked about it is highly reactive non metal, so that is the difference. यहाँ पे metal सोडियम मेटल है, phosphorus non metal है. To prevent it from catching fire simultaneously in the air, it's stored in water. So यहाँ पे देखो एक को केरोसिन में रखा गया है, एक को वाटर में रखा गया है. When we talked about sodium is the metal, highly reactive metal. To prevent that particular metal to catches the fire spontaneously whenever they come in contact with air and water. So sodium matter is kept in the kerosene, stored in kerosene, or kept under kerosene you can write. Phosphorus highly reactive non metal है, उसको भी आग से रोकने के लिए, ना कि वो केरोसिन में, इट इज स्टोर्ड इन वाटर. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच नॉन मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, स्टोर्ड इन वाटर अदर देन केरोसिन. तो यहाँ पे लिखेंगे हम phosphorus. Phosphorus is the non-metal which is stored in water, not in kerosene. So that is third and fourth. Now moving on fifth. So here gold and silver are used for making jewelry. गोल्ड सिल्वर ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है. तो यहाँ पे मैंने दो रीज़न लिखे हैं, हाईली मैलिएबल एंड हाईली डक्टाइल मेटल्स. मैलिएबल का मीनिंग होता है दे आर गोइंग टू बी देयर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, एंड डक्टाइल दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी देयर ड्रोन इनटू थिन एंड फाइन वायर्स. ये दोनों बहुत ज़रूरी है ज्वेलरी बनाने के लिए. वायर्स की ज़रूरत पड़ती है गोल्ड को शीट में कन्वर्ट करके उसे शेप एंड डिज़ायर्ड पर्टिकुलर पैटर्न्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से देर आर गोइंग टू बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. तो दो रीज़न लिखेंगे, हाईली ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ हाईली मेलिएबल एंड हाईली डक्टाइल, और इधर यू कैन राइट दैट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, both the metals are used for making jewelry. So gold and silver, they are the highly malleable as well the ductile metals, and that's why they are going to be converted into thin sheets as well. You can write that they are going to be there drawn into thin and fine wires, and that's why they are going to use for making jewelry. Now the last one is they related with that particular same reason only. Copper is used in electrical wiring. कॉपर मेटल जो है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ होता है. तो मैंने अभी बोला कि इसके पीछे का सेम रीज़न लिखेंगे, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी जिसकी वजह से मेटल आर गोइंग टू बी देयर ड्रोन और कन्वर्टेड इनटू फाइन वायर्स, एंड दिस इज द रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर मेटल कॉपर. So that's why it is used in making electrical wire, or it is used in electrical wiring. So that is all about today. From tomorrow we are just starting the revision of chapter number 18.